Hey darlings, I hope you're having a divine time. For all those who are new here, I'm Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected to us, thank you so much. You're giving us so much inspiration to continue with these kind of videos and helping us grow. हमारा पहले वाला व्लॉग अगर आपने देखा होगा, I again went to Crawford Market. मैं हर 3-4 महीने में वहाँ पहुँच ही जाती हूँ और आज मैंने सोचा that I'll show you guys what all I bought from there. Also we went to महाबलेश्वर और वहाँ का जो शॉपिंग स्ट्रीट का वीडियो I had put up. couple of people messaged me and told me कि आप उसका भी हॉल बनाओ. वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा सामान लिया नहीं था, so I thought I'll just incorporate my महाबलेश्वर haul also in this. Now Crawford का I wanted to give you guys a little gist about this place. So Crawford जो है वो situated है southern मुंबई में. Now a lot of people feel that Crawford market बहुत cheap market है, वहाँ पे बहुत Chinese kind of products आते हैं which don't last very long. But the fact remains कि Crawford doesn't only have, it has a lot of Chinese stuff that comes in, but उसके संग it has a lot of stuff that people are producing in wholesale. So basically Crawford market मुंबई का तो one of the biggest market है ही for wholesale. It is also one of the India's biggest wholesale market. So आप कोई भी 2-tier 3-tier cities होंगी जहाँ पे you don't have like a branded shop that suppose जैसे शिमी वोग है या for that matter Miniso है, they come directly from their own warehouses. But other than that, all over India people come to Crawford Market to pick up the stuff and they sell it out. It could be jewelry, it could be makeup, it could be crystals, anything. मतलब बहुत चीज़ें मिलती हैं, all the kind of different flowers, plastic flowers, then your curtains and everything. So the only thing is it is just like any other shop, but वहाँ पे आपको wholesale rate में मिलता है. So that is why it becomes a little reasonably priced for you. And otherwise आप जो बाहर भी shops में खरीद रहे हो, you're going to be paying for the same stuff just at a more expensive price. And ये basically import होता है. The reason Crawford is in Bombay is also because ये सारा cargo से basically import होता है, which is via ship. And JNPT port is very known, big, one of the port ports of India. So that's where it comes in containers. अब वो containers में आता है, it goes to the wholesalers and then they start giving it out to retailers. So that's why वो थोड़ा reasonably price मिलता है because they are able to cut the cost of retailers, transport, because वो directly जो आ रहा है one way of transport, उसके बाद they put it in the shops. So yeah, that was about Crawford. Now we'll start with the haul of what all I bought. First thing that I bought from Crawford is these floating flowers. So basically this costed me $50. Normally अगर आप online भी देखोगे या you go to any of these retailer shop, it will cost you more than 100-150. So this was one thing that I bought. The second thing that I bought is, आप सबको मेरा crystal craze पता ही होगा अब तक, whoever's been connected with me for a longer time. So this is another jar that I bought. This half-liter jar जो मुझे approximately 100-120 cost किया. Now I use a lot of crystals, so if I buy very expensive crystals immediately 6-7 months of regular use in the house बहुत जल्दी chip होते हैं. So I normally every day के लिए I use the crystal that I buy a little on the reasonable side, so that अगर chip जल्दी भी हो गया, you don't feel bad about it. The second one that I bought was this. This is 1 liter का jar. So I use this for milk and अगर बहुत सारे लोग हैं तो फिर juices and all के लिए I use this. But mostly in the house I use this for milk. After boil करके this I put in the fridge. So it's easier for Ashrika also to pour because वो पूरा तपेले and all के संग वो pour नहीं कर पाती. It gets heavier. So this is very useful for that. The next thing that I bought was this cup. So this is how it looks. And this costed me around 120 for a set of 6. So ये basically जब हमारे normally I like to keep kettle and cups का set, but जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, हमारे जो regular viewers होंगे उनको पता होगा, जतिन और मुझे we love having people around, तो हमारे 10-15 लोग भी हो जाते हैं घर पे तो हमें बहुत मज़ा आता है.
तो उस टाइम पे वो 6 वाले केटल्स नहीं वर्क करते हैं. सो फॉर दैट आई गॉट दिस कि अगर एक्स्ट्रा कप्स एंड ऑल चाहिए होता है तो इट कम्स इनटू हैंडी यूज. Next thing that I bought were these bed sheets. They are double bed sheets, queen size. If you can see, it is written 1500 MRP, but I bought this for 750. So मैंने 3 कलर्स लिए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं. And this I have been using. ये मैंने अभी लिया, but इसके पहले भी when I was setting up the house मैंने खरीदा था. And quality is very nice. Every week also I'm washing it, but the color and all is not fading away. So yeah, almost 50% lesser on the price of the MRP I got. The thing that I got was this. So basically ये light है. इसमें 3 जो आप देख रहे हो, you can put in anything. कोई भी numbers आप डाल सकते हो, names डाल सकते हो. You can put in something like welcome to my room. And we get all of these. तो इसमें सारे alphabets, numbers and a lot of these kind of emojis are there. So आप Ashrika uses it a lot. And to light up there is this cable, so you can just connect it to this cable and it lights up. I think I'm done with whatever I got from Crawford. Now Mahabaleshwar से I picked this up. This bag actually आश्रिका only picked up for herself. इसकी मुझे प्राइसेस याद नहीं है, वो मैं आश्रिका से पूछ के, बिकॉज ये मोस्टली शॉपिंग सब उसने करी थी. So I'll ask her the price. She would definitely remember her and I'll put it across. The next I bought was this. So basically जब आश्रिका आपने हमारा अगर कॉफ़ी टेबल देखा होगा, हम नॉर्मली डिनर वहाँ पर करते हैं बिकॉज वी लाइक टू वॉच आवर मूवी या सीरियल. हम तीनों रात को देखते हैं और हम डिनर करते हैं. सो उसको इफ शी सिट्स ऑन द गद्दा उसके लिए बहुत ऊंचा हो जाता है, एंड इफ शी सिट्स ऑन द ग्राउंड उसके लिए बहुत नीचे हो जा रहा था. सो आई बॉट दिस फॉर हर कि वो वहाँ बैठ के शी कैन हैव हर डिनर ऑन द कॉफी टेबल एज वेल. द नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट इज द पिकनिक बास्केट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. आई होप इट्स विजिबल. कैन बी क्लोज्ड इनसाइड. This one I bought for our picnic because यहाँ पे now that we started staying in Pune हम बहुत ज़्यादा hiking and all जा रहे हैं. And now that friends also keep coming over, तो हम बहुत early mornings जाते हैं. We have kids with us, तो हम we want to start hiking and doing breakfast on top of the hills. तो हमने decide किया कि इसमें we can put our juices, milk and sandwiches and take them across for our hiking. So that was the reason that I bought this. So picnic box बहुत cute लग रहा था मुझे. The next thing I bought from Mahabaleshwar that Mahabaleshwar is very famous for is these shoes. These come in all shapes and sizes. मेरे पास और भी बहुत सारे पहले के हैं. They are very warm. तो बॉम्बे में तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं थी बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बॉम्बे में. बट पुणे में इवन रेंज में अभी हम AC फैन कुछ नहीं ऑन कर रहे हैं. सो इट गेट्स वेरी कोल्ड इन द डे एंड एट होम वी डोंट वेयर द आउटसाइड स्लीपर्स मोस्टली. तो उसके लिए आई बॉट दिस फॉर जतिन बिकॉज वो ही कैन स्लिप इन टू दिस. ही डजंट लाइक स्टेइंग एट होम ऑल्सो विदाउट स्लीपर्स. और मुझे बाहर के स्लीपर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते. सो या दिस इज वॉट ही बॉट. क्रॉफर्ड मार्केट का गोइंग एंड बाइंग एंड ऑल वाला पार्ट आपने देख लिया होगा. दिस इज फ्रॉम क्रॉफर्ड मार्केट. क्रॉफर्ड मार्केट का जाने वाला हॉल आपने क्रॉफर्ड मार्केट का जाना वाला क्रॉफर्ड मार्केट के रहने दो बहुत बुरे लग रहे. तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया. आपने देख लिया होगा. दिस इज कुछ भी क्रॉफर्ड मार्केट का अरे कुछ तो बोल बहन. कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा.